पीछे रह गई हैं, आगे छोड़े, इसको अमली करना है, हमने बहुत से डिलीवर करना है। और हमारी इससे पहले कि मैं बाकायदा मौलाना सूफी मोहम्मद बिन अल हज़रत हसन और सूबाई हुकूमत के कामयाब मुज़ाकरात के बाद सूबाई हुकूमत ने फ़ैसला किया है कि आज से मलकन डिवीज़न बशमूल ज़िला कोहिस्तान हज़ारा के निज़ाम अदालत के ताल्लुक़ में जितने गैर शरई कवानीन यानी कुरान और हदीस के ख़िलाफ़ हैं वो मौकूफ़ और कलादम तसव्वुर होंगे यानी ख़त्म होंगे। इसी निज़ाम अदालत में शरीयत मोहम्मदी जिसकी तफसील इस्लामी फ़िक़्ह की किताबों में मौजूद है और इसके माख़ज़ 4 दलाइल हैं, किताबुल्लाह, सुन्नत रसूल, इजमा, क़ियास, वजूबन नाफिज़ुल अमल होंगे। इसके ख़िलाफ़ कोई फ़ैसला कबूल नहीं होगा और इसकी नज़रसानी यानी अपील की सूरत में डिवीज़न की सतह पर दारुल क़ज़ा यानी शरई अदालत बेंच कायम कर दिया जाएगा जिसका फ़ैसला हतमी होगा। हज़रत सूफ़ी मोहम्मद बिन अल हज़रत हसन के बाहमी मशवरे से अदालती शरई निज़ाम के हर नुक्ते पर तफसीली गौर करने के बाद इसका मुकम्मल इतलाक़ मलकन डिवीज़न बशमूल ज़िला कोहिस्तान हज़ारा में अमन कायम करने के बाद बाहमी मशवरे से किया जाएगा। हमारी हज़रत सूफ़ी मोहम्मद बिन अल हज़रत हसन से दरख्वास्त है कि वो अपना पुरअमन एहतजाज ख़त्म करके मलकन डिवीज़न के तमाम इलाकों में अमन कायम करने में हुकूमत का साथ दे। मलकन डिवीज़न में इंशाअल्लाह ताला अदालती निज़ाम शरीयत मोहम्मदी लगेगा तो उसी वक्त इंशाअल्लाह ताला हमारा उम्मीद है कि अमन आएगा। माहिदा जो आपस में दस्तखतें हो मलाकंड में भी होगा, बाजोड़ में होगा, इसके बाद वजीरिस्तान और इन इलाकों में भी हम जाएंगे। हमारे मियां साहब ने जो कहा है इंशाअल्लाह हमारी यही मौक़िफ़ है और अमन के लिए इंशाअल्लाह हम इकट्ठे कोशिश करेंगे ताकि जल्द अज जल्द मलकन डिवीज़न में अमन कायम हो। Swat in northeast Pakistan was once the country's equivalent of the Lake District, a holiday resort. Now it's effectively a Sharia law tribal land, where hooded Taliban fighters control the streets and watch for outsiders, wary of us as well, even though we had permission to travel from their leaders. What's clear is that the elders oversee a well-organised and brutal militia. They passed us previously unseen video footage of their men in action. It's propaganda, but when forensically examined, it's frightening. Everything is filmed in what used to be Pakistan's main tourist destination. In the mountains, a Taliban training camp. Until recently, suicide bombing in Pakistan was almost unheard of, but the Taliban dedicates a large chunk of their film to the bombers. All desperately young men, grinning with pleasure as their colleagues congratulate their decision. It shows them putting on suicide bomb vests, and then the attacks are filmed. The bombed-out ruins of police stations and military camps pepper the towns and villages of Swat. This is the central police station in Mangura. It's been reduced to rubble by 3 separate suicide bomb attacks. Perhaps that's why the Pakistani authorities felt that they had to do a deal with the Taliban. Their own police and security forces were simply getting overwhelmed night by night. The brutality of the film is perhaps the most disturbing. A man accused of burglary is very publicly shot dead in the street. A captured police officer is filmed being questioned. Months later, he is beheaded. Swat is being transformed into a Taliban statelet.
The sign above this market reads "Women are not allowed." Arrive for the very first session of a new Islamic court. There are prayers before judgment in this system that means the rules of the Quran, not the state, take precedence. It's a break from the corruption of the past, a spokesman insisted to reporters. Over the past couple of days, a case of a loan dispute was brought to the court. Both sides were summoned and a verdict delivered on the same day. The Taliban wants this system to be successful, and when it is, there will be no need for people to carry arms. This was a police station, but now the Taliban sleep here. Their attacks forcing the police out and Pakistan's government into a peace deal under which the Taliban were allowed to have Islamic law here. 2 months ago, this picturesque valley was torn up by panic. An estimated 200,000 fleeing the army's advance against the militants. Scenes of dislocation just 3 hours' drive from the capital Islamabad that shook Pakistan. 10 security forces personnel have been kidnapped from Upper Dir from a checkpost. Bunair operation. The operation in Bunair is progressing smoothly. During last 24 hours, 55 to 60 militants have been killed. को तबाह किया है, जबकि 5 इतलात के मुताबिक जो शरपसंद हथियार इस्तेमाल कर रहे हैं, उसमें أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. दादे बोए डेम से कमजोरीगी दा इज्तिमाई दे बुनियाद दे टिका अमल खोली से दा अल्लाह का दिन सरती ओनन सा बोले ददियो जो जो दे सलामन मशरा का बोली दी मुए छे दे कादिम सारा दे बुई ए तो हमारी को खाना को खुनियो वसती व इंशाअल्लाह कजा अल्लाह रब्बुल इज्जत मेरे में दे बंद का दुनिया के कानून को तो शेर या नबी इंशाअल्लाह जो कौन बंदे उड़ने में जमा गुजरा और गया कि रसूल मजमाओ इंशाअल्लाह जदीद जमे मंजूर कीगी तकबल तरफा और कोमल से खने तरफा وين رجع دوسي دبتي ولا بخبلا دبتي شو وطن دې مونږه الوکا دې غیستو د بوزي هم نه کوي د عوامو په خیر باندې کیږي ولا لا خپل کور نه پیسې راخلي او د الله په دین باندې یې لګوي نو ته اوس پرې د موږ سره د پاکستان حکومت نه اندور کړی او نه ته موږ وخت पाकिस्तान की जानब से कि पाकिस्तान की एजेंसियों की तरफ से आपकी मदद की जाती है तो उन्होंने कहा कि ना पाकिस्तान की किसी भी एजेंसी को हम नहीं जानते, ये सिर्फ ना ही हमने उनसे कोई रकम ली है और ना ही हम उनको जानते हैं, ये सिर्फ अल्लाह की ख़ास अल्लाह की रज़ा के लिए ये कबायली इलाका जात वाले खुद अपने लश्कर में बनाए और खुद ही अपना चंदा देते हैं. A display of firepower by the field guns as the military regains control, kilometer by kilometer, over a vast but strategic stretch of territory bordering Afghanistan. Safed Ko, or White Mountain, is a 5-pronged operation to regain control of this tribal territory of Kurram and to open the main highway to Parachinar. We were made hostages by the Taliban for the last 3 or 4 years, but no one was allowed to enter or leave the area. There was no other way except the military operation to flush them out so that we can move freely. The military has even brought in its armor, and as they take back more territory, their movements is sometimes stopped by incoming fire from the Pakistani Taliban. The convoy stops briefly, but after returning fire from these guns, Sedalta हर शहीद जापुरात सी के पार्लियामेंट दे के अदालत दे के सहाफत दे वो निराश न होए
دا هر څه